Hello friends. Friends, yesterday we have discussed previous year questions of SSC-CGL 2017 of part 1 and today we will discuss part 2 here. So it is all about SSC-CGL 2017 of biology section. So let's begin friends. These are my credentials. Question number 62. The right portion of human heart receive dash blood. Pure, impure, mixed, none of these. फ्रेंड जो हमारे हार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज राइट हाफ एंड अदर वन इज लेफ्ट हाफ. एक होता है राइट पोर्शन, एक होता है लेफ्ट हाफ पोर्शन. जो राइट पोर्शन है दैट रिसीव्ड ब्लड विच इज इम्प्योर फ्रॉम द बॉडी. इम्प्योर का मतलब क्या हो गया? दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड. दैट मीन दे डजंट हैव ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती. दैट इज नोन एज इम्प्योर ब्लड. सो इम्प्योर ब्लड को वो रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी एंड देन इट पंप इनटू द सेम टू द लंग्स. लंग्स के अंदर वो इसको पंप कर देता है फॉर द ऑक्सीजनेशन. दैट मीन फॉर प्योरिफिकेशन पर्पस. सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम. This is our heart. So you can see this is the right portion. This color is blue. That means this is deoxygenated or impure blood. इसमें ऑक्सीजन नहीं है and this is impure blood. And ये जो blood होता है that is coming from the body's part. All body organs और parts जहाँ से भी ये सारा blood आता है. Superior vena केवा, दो तरह की वेन है ये वेसल्स होती हैं और ये वेन है जो ये सुपीरियर वेना केवा है, एक इन्फीरियर. इन दोनों से ये ब्लड हार्ट के अंदर आता है राइट एट्रियम में एंड देन इट इज़ पम्प्ड बैक टू द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस. और वहाँ पर ये प्योर हो जाता है बाय ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन मीन्स ब्लड जो हीमोग्लोबिन होगा ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा. देन इट विल पम्प्ड इनटू दी दिस पोर्शन. ये अरोटा इसके अंदर आ जाता है हार्ट के अंदर राइट लेफ्ट पोर्शन में एंड देन इट इज़ रिसीव टू दी ऑल बॉडी ऑर्गन. यहाँ से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्योरिफाइड ब्लड. सो इसका करेक्ट आंसर है कि जो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट है दैट कैरीज द इम्प्योर ब्लड. So here correct answer is the right portion of the human heart receive impure blood. That mean deoxygenated blood. That mean oxygen is not binded with the hemoglobin. जो blood है उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग फॉर्म में नहीं है. That is impure blood और deoxygenated blood. और अगर हम लेफ्ट पोर्शन की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट रिसीव लेफ्ट पोर्शन में कौन सा होगा? प्योर ब्लड. और प्योर ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. सो डोंट कंफ्यूज. राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड. 63. In which of the following part of the human cell does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? 1 cytoplasm, 2 nucleus, 3 mitochondria, 4 chloroplast. तो इसका करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. तो समझते हैं. चलो इसमें क्या होता है कि जैसे जब भी हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं या कुछ भी एनर्जी कंज्यूमिंग कैलोरी प्रोड्यूसिंग फूड खाते हैं तो जब ये फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इट विल फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाता है. सो जो ये ग्लूकोज होता है दैट इज़ जो सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में, जो पायरुविक एसिड बन जाता है. अब ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड का यहाँ पर. देन पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल सेल. जो पायरुविक एसिड है दैट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल इनसाइड द सेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर सेल. तो सेल के अंदर जब ये जाता है देन इट कम्प्लीटली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी रिलीज होते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो ये जो प्रोसीजर है पायरुविक एसिड से लेके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन एज वेल एज रिलीज ऑफ एनर्जी. So much of energy is released, it is known as complete oxidation and this इसको साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल. This occur inside the mitochondrial organelle. So here correct answer is mitochondria. What is plant cell wall mainly composed of? 1 lipid, 2 vitamin, 3 cellulose, 4 protein. Here correct answer is 3.
जो प्लांट सेल वॉल होती है दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और इसके और अगर इसकी बात करें हम कंपोनेंट्स की, देन कंप्लीट कंपोनेंट की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टीन. सो हेयर करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज. प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इट इज ए पॉलीसेकेराइड. Which of the following is not a primary greenhouse gas in the Earth's atmosphere? Methane, ozone, nitrous oxide, hydrogen. So here correct answer is fourth one. That means hydrogen is not a greenhouse gas because क्योंकि जो hydrogen है that has same atom that has two HT. अगर इसकी फॉर्मूला देखें तो H2 means H bond H. ये इसके दो एटम होते हैं जो कि सेम होते हैं एंड इट डज नॉट हैव द एप्रोप्रिएट केमिकल स्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी. ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, दैट्स वाई इट्स नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेज. गैस में नहीं आता है ग्रीन हाउस. अगर हम दूसरे ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे दैट इट इंक्लूड्स मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. दीज आर ऑल ओजोन, दीज आर ऑल green house gases. So here correct answer is 4. Which blood group is universal donor? O positive, O negative, AB negative, AB positive. So here correct answer is 2. That means O negative is universal donor. The human being which have O negative blood group can donate blood to the anyone of the human. So O negative is a universal donor. They can give blood to any type of blood group containing person. So here correct answer is 2. In how many parts is the human brain divided? 2, 3, 4, 5. Here correct answer is 2. That means human brain is divided into 3 parts. First part is known as forebrain. That means आगे वाला part, आगे वाला brain, the midbrain, the middle portion and the hindbrain, पीछे वाला brain. So it is divided into 3 parts. One is forebrain, second one is midbrain and third one is hindbrain. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival, and this life supporting system is known as ecosystem, mountain range, forest, atmosphere. So here correct answer is 1. That mean in the biosphere जो living beings हैं, that mean organism, animals, whatever kind of human being आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित हैं एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो एक दूसरे पर भी निर्भर हैं फॉर सर्वाइवल. सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर बोथ इंक्लूडेड. अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज A 1 leukocyte, 2 erythrocytes, 3 platelets, 4 thrombocytes. Here correct answer is 4th one. That means the other name of platelet is thrombocyte. Platelet is a type of blood cells and this is also known as thrombocyte. इनको thrombocyte भी बोलते हैं and इनका काम क्या होता है? They are involved in the clotting of blood. Blood के clot में बनाने में help करते हैं. So they are basically helping in formation of clot so that your bleeding stop. Dash is the second largest animal phylum. Mollusca, Chordata, Coelomates, Annelida is Mollusca. That means Mollusca is the second largest animal invertebrate animal phylum. ये invertebrate का second largest है. अगर first की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा है. अच्छा, इसमें around Mollusca के अंदर 85,000 of species are recognized. So it is a second largest animal phylum in invertebrates. And first one is arthropoda. Which type of forest majorly comprises of lichen and mosses? Taiga forest, tundra forest, temperate, mixed forest, tropical evergreen forest. Here correct answer is 2. That means the lichen and mosses are mainly found in tundra forest. टुंड्रा क्या है? टुंड्रा इज ए बायोम, ग्लोबल बायोम जो कि ट्री लेस है. वहाँ पर ट्री नहीं होते और मेजरली वहाँ पर ड्वार्फ श्रब एंड मॉसेस, लाइकेन, ग्रासेस इसी टाइप की वेजिटेशन होती है एंड दे डोंट हैव बिग ट्रीज. सो इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रासेस, लाइकेन एंड मॉसेस. Here correct answer is 2. Algal bloom.
दैट मीन द जब फ्रेश वाटर में या फिर मेराइन वाटर में एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एक्यूमुलेटेड इनटू वाटर, then what happen, higher concentration of these nutrient in water causes the increased growth of algal plants or algae or algal blooms भी बोलते हैं जिनको हम. So second is a correct answer. Lion, leopard and tiger are all species of which genus? Solanum, Panthera, Felis, Tigris. Here correct answer is Panthera. Lion, leopard और tiger जो होते हैं they are all species of Panthera genus. ये Panthera genus के अंदर आते हैं. Dash are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. So basically they are asking about the difference between the primary and secondary phloem. जो primary phloem में नहीं होता but it is present in the secondary phloem. So one xylem fiber, xylem parenchymatous, parenchyma, phloem parenchyma, phloem fiber. Correct answer is fourth one. That mean phloem fiber होते हैं. That is found that phloem fibers are made up of sclerenchymatous cells. जो sclerenchymatous cells होती है इनका मेन जो होता है वो क्या होता है, इनका मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन है sclerenchymatous cells का टू सपोर्ट दी सपोर्ट का काम करता है. ये सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज हैविंग phloem fibers. So phloem fibers are found in secondary phloem. So here correct answer is fourth one. Phloem fibers are made up of sclerenchymatous cells. What type of a body plant does coelentrates, ctenophores and echinoderms have? Annelids, radial symmetry, bilateral symmetry, platyhelminthes. So they are actually, these are phylum Annelida and platyhelminthes. So these are not a symmetry. So 1 and 4th option is incorrect. And now 2 option is left, 2 and 3. That means radial and bilateral. These are a kind of symmetry. So they are basically asking what type of body plant does coelentrates, ctenophore and echinoderm have. So here correct answer is 2. That means radial symmetry और radial body plane भी बोलते हैं जिसे हम. So इसका मतलब क्या है? Symmetrical arrangement या body plane, arrangement of parts of organisms around a single main axis, so that the organism can be divided into similar half by any plane. अगर हम किसी भी हाफ से उसको, किसी भी प्लेन से उसको कट करके देखेंगे एनिमल को, तो 2 पर्टिकुलर भाग में वो डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स भी सिमिलर होंगे. अगर यहाँ पर उसका ये ऑर्गन है तो दूसरे साइड पे भी दूसरा ऑर्गन सेम ऑर्गन होना चाहिए. So they are divided into completely when they divided from any plane, so it will similar from one part is similar from the other part. उसके मेन एक्सिस से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके दोनों पार्ट सिमिलर होते हैं. तो इस तरह की सिमेट्री और बॉडी प्लेन हमें किस में दिखता है? इकाइनोडर्म वाले ऑर्गेनिजम्स में, सिलेंट्रेट्स में एंड टीनोफोर्स. सो हम अगर उनके एनिमल्स को देखेंगे इस फाइलम के, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स फाइलम के ग्रुप में जो भी एनिमल है, उनके बॉडी को हम अगर 2 हाफ्स में किसी मेन एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो कट करेंगे तो दे आर सिमिलर. सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार फिश को देखते हैं, सो इफ़ वी कट फ्रॉम दिस साइड देन इट प्रोड्यूस आइडेंटिकल 2 पार्ट्स, एंड इफ़ वी कट फ्रॉम दिस साइड किसी भी प्लेन से हम इसको कट करके देखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस रफली 2 आइडेंटिकल साइड. सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री और बॉडी प्लेन इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. Which of the following is one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria and are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies? Agar, cholera, spirulina, gymnosperm. So this is the product obtained from Gelidium and Gracilaria. These are the 2 these are the 2 type of compound है. I don't know what is this, but from this we can obtain agar. agar को हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर. लेबोरेटरीज़ में हम जब माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में अगार का यूज़ होता है. दे आर एक्चुअली मेकिंग फॉर मीडियम. ये मीडिया बनाने में यूज़ होता है और वहाँ पर हम इसको माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, ग्रोथ देखते हैं हम उसकी. सो दे आर बेसिकली यूज्ड इन
laboratories, especially microbiological laboratories, and they are also used in preparation of ice cream and jellies. So here correct answer is 1 agar. अच्छा, ये जो ग्रेसिलेरिया है दिस इज़ ए रेड एल्गी. ये एक रेड एल्गी है जिससे हमें अगार ऑब्टेन होता है, और मैक्सिमम इंडिया में जो अगार होता है वो इससे जेलिडियम नाम की एल्गी से ऑब्टेन होता है. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 1. टीनिया, टेपवर्म, फेसियोला, liver fluke are example of which phylum? Coelenterata, platyhelminthes, annelids, arthropods. So जो टीनिया है that is tapeworm, and fasciola that is liver fluke. These are common parasite of human being, and this is an example of phylum platyhelminthes. Platyhelminthes मतलब होता है platy means flat helminthes. These are flatworms and इनके example है liver fluke and tapeworm. So अगर हम liver fluke की बात करें, so it is a parasite that can cause disease in human being and animals. और इसका जो इन्फेक्ट होते हैं, हम इन्फेक्ट कैसे होते हैं? फ्रॉम दी ईटिंग कंटेमिनेटेड फिश और ड्रिंकिंग वाटर. अगर हम कंटेमिनेटेड फिश खाते हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर में भी ये इन्फेक्शन फैलता है ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू भी. So these are the common worms which causes this act as a parasite, and these causes disease in human being. So these are the two worms and that they belongs to the platyhelminthes phylum. Platy means होता है flat and helminthes means worm, flatworms. So they are example of flatworms. Which one of the following is not a major abiotic factor? Temperature, water, light, air. Here correct answer is 4th one. That means air is not a major abiotic factor. Abiotic factor कौन से होते हैं? जो कि responsible होते हैं for the growth of biotic factors. Ecosystem में हम जब पढ़ते हैं तो हम we are studying about the primary producer होते हैं उसमें. So primary producer क्या है? Plants है. उनके survival के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है light for the process of photosynthesis, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं. So they are survived by the light, water, temperature. These three factors affect the primary producer. And air जो है this is not a major abiotic factor. Air से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, but these are the three main important factor, abiotic factor that causes the growth or synthesis of biotic factor. Biotic factor में आ गए primary producers like plant की growth सबसे ज़्यादा important है उसमें ecosystem में. So here correct answer is 4th one. Which of the following phylum are also called as flatworm? Mollusca, Chordata, Ctenophora, Platyhelminthes. The correct answer is 4th one. That means Platyhelminthes. We have just discussed this question before. अभी जस्ट हमने रिसेंटली इसको अभी 1 क्वेश्चन से पहले इसको डिस्कस किया है, और इसमें हमने अभी बात की थी कि लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म आर द टू वर्म्स दैट आर known as, they belongs to the platyhelminthes phylum, and this is also known as flatworm because platy means होता है flat and helminthes means worm. So platyhelminthes के अंदर जो worms होते हैं उनको हम कहते हैं flatworms. So here correct answer is 4th one. The male sex accessory ducts include vasa efferentia, epididymis, vasa deferens, and cervix, retitestis, glands, seminiferous tubules. So here correct answer is retitestis. Retitestis क्या है? This is a network of a small tubules that is found in part of the testicle. Testicle के अंदर होता है and that carries the sperm. So here correct answer is 2. The meristem which occur between mature tissue is known as dash meristem. Intercalary, primary, lateral, apical. Here correct answer is 1. That means intercalary जो होता है मेरिस्टेम that is present in between the mature tissues. अच्छा, मेरिस्टेम होते हैं that is classified by their location. वो 3 तरह के होते हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको बांटा गया है. First one is apical मेरिस्टेम. अपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे? दैट इज़ लोकेटेड एट द रूट एंड शूट टिप्स. जो रूट है एंड शूट है उसके टिप्स पे होते हैं. दिस इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम. एंड अदर वन इज लेटरल, जो कहाँ पाए जाते हैं? इन द वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बिया के अंदर. और थर्ड वन होते हैं इंटरकलरी. इंटरकलरी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? एट द इंटरनोड और स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस एट विच लीव्स अटैच और लीफ बेसिस के बीच में होते हैं, यानी कि मेच्योर टिश्यूज़ के बीच में होते हैं. सो दे आर स्पेशली फाउंड इन
ग्रास इसका एग्जाम्पल है, ग्रास में फाउंड होते पाए जाते हैं. सो इंटरकलरी जो मेरिस्टेम है दैट इज़ फाउंड बिटवीन द मेच्योर टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड इन बिटवीन द एट द प्लेस वेयर द लीफ अटैच, और लीफ बेस के नीचे पाए जाते हैं. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 1. What is the name of the acid in grapes? Means they are asking about the acid name in grapes. जो भी acid होता है grapes के अंदर, that is 1 lactic acid, formic acid, acetic acid, tartaric acid. Here correct answer is 4th one. That means tartaric acid is found in the grapes. Grapes के अंदर होता है tartaric acid. Which fiber is also called as artificial silk? Nylon, rayon, polyester, acrylic. सो हेयर करेक्ट आंसर इज रेयन. रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. ये आर्टिफिशियली बनता है, मैन मेड है, एंड पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क. सिल्क के जैसी इसमें प्रॉपर्टीज होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 2. रेयन इज ए आर्टिफिशियल, इट इज़ नोन एज ए आर्टिफिशियल सिल्क. Which is the only one example of mollusca phylum? Locust, butterfly, scorpion, octopus. Here correct answer is 4th one. That mean जो mollusca है, that's here the octopus belongs to the mollusca phylum. octopus belong करता है किससे? mollusca phylum से. अगर हम locust की बात करें, so this is a grasshopper and butterfly and scorpion. These are 3 belongs to the arthropoda phylum. So here correct answer is 4th one. In male reproductive system, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called glands, scrotum, testicular lobules, seminiferous tubules. So in human being, testes are always situated outside the abdominal cavity. Abdomen के अंदर नहीं होते हैं, वो बाहर होते हैं, and within a pouch, जिस pouch को हम बोलते हैं scrotum. So male reproductive system में testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch that is known as scrotum. So here correct answer is 2. Which of the following is not among the 3 main classes of algae? Chlorophyceae, rhodophyceae, phaeophyceae, gymnosperm. Here correct answer is 4th one. That means gymnosperm not belongs to the algae. It is not a class, but gymnosperm क्या है? It is a group of seed producing plant that include conifers, cycads and genotypes. So इसमें ये क्या है? gymnosperm seed producing plant है, ये plant kingdom में आता है, and these chlorophyceae, rhodophyceae, phaeophyceae belongs to the algae classes. Cycon, Scypha, Spongiella, freshwater sponge, and Euspongia, bath sponge, are example of which phylum? So they are basically species in phylum. Which phylum they belongs to? 1 Coelenterate, Platyhelminthes, Ctenophora, Porifera. Here correct answer is Porifera. The Cycon, Spongiella and Euspongia, these are example of phylum Porifera. So here correct answer is 4th one. The pore bearing phylum Porifera, it's a invertebrate phylum. ये जो aquatic animal का invertebrate phylum है, that is all belongs to aquatic animals, यानी पानी वाले जितने भी invertebrates हैं, so they comes under the Porifera category. especially इसमें pore होते हैं इनकी body के ऊपर, so that's why its name is known as its name signifies, it's a Porifera. It's a phylum belongs to, these are the sponges which belongs to the Porifera category. Fire extinguisher emit which gas? Carbon monoxide, chlorine, carbon dioxide, nitrogen. Here correct answer is 3. That means carbon dioxide act as a fire extinguisher. Fire extinguishers के अंदर जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. इट हेल्प्स इन रिमूविंग द फायर, और ये आग बुझाने में हेल्प करती है. सो इट इज़ ए कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर. A multicellular organism grows by cell addition, cell explosion, cell implosion, cell division. Here correct answer is cell division. Cell division is a process by which a multicellular organism grows. Cell divide, one cell divide into 2 and 2 into 4, 4 into 8.
So this is also known as mitosis. So cell division or mitosis is a process by which multicellular organism grows. The male sex organ in a flower is the zoospore, stamen, pistils, chlorophyce. Here correct answer is stamen. Stamen is a male reproductive part of the flower. So it is composed or it is made up of anthers and filament. जो anther होता है टॉप पे वो pollen produce करता है. So this is stamen act as it is a male reproductive part of the flower. In animal like annelids, mollusca or mollusk, organs have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function, and this pattern is called dash system level of organization. Organ, open, closed, coelom. So here correct answer is 1. That means this is a organ system level of organization. जब भी बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं एसोसिएट होके फॉर्म एसोसिएट होके टिश्यू बहुत सारे एसोसिएट होके ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन जो होता है वो काम करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शनल सिस्टम की तरह काम करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डैश इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. सो दे आर आस्किंग अबाउट द फिनोमिना, और जो भी है उसको हम क्या कहते हैं जब हम नंबर ऑफ डेथ, पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेथ होती है पॉपुलेशन के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी डेथ हुई, जिसको क्या बोलते हैं, दे आर आस्किंग अबाउट दे. सो फर्स्ट नेटेलिटी बोलते हैं नो, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन. हेयर करेक्ट आंसर इज मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और नेटेलिटी इसके जस्ट अपोजिट है. इट इज़ ए बर्थ रेट, इज ए बर्थ नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो हेयर मोर्टेलिटी मीन्स क्या हो गया? डेथ रेट, एंड नेटेलिटी मीन्स birth rate. So here correct answer is 2. A healthy adult man has on an average in million of RBC, red blood cells corpuscle of blood. ये पूछ रहे हैं कितने मिलियन ऑफ RBC प्रेजेंट होनी चाहिए ब्लड के अंदर. 1, 5 to 5.5, 4 to 4.5, 3 to 3.5, 6 to 6. Here correct answer is 1. That means 5 to 5.5 million RBC should be present in a healthy adult. एक किसी भी adult man के अंदर इतनी RBC should be present. The female sex organ in a flower is the zoospore, stamen, pistil, chlorophyce. Here correct answer is 3. That means pistil is a female sex organ which is found in flower. Animal in which the cells are arranged in two embryonic layers are called diploblastic, ectoderm, triploblastic, endoderm. Here correct answer is 1. That means diploblastic. Animal in which the cells are arranged in two embryonic layers, that is known as diploblastic. अगर उसमें 3 embryonic layer होती है then it is called as triploblastic layer. Diplo means 2 and triplo means 3. So here they are asking about 2 embryonic layers. So it is a diploblastic. The animal in which the body cavity is absent are known as coelomates, wild, pseudocoelomate, acoelomate. So they are asking about animal in which the body cavity is absent. उनको क्या बोलते हैं हम? acoelomate. That means there is a absent of coelom. और अगर coelom body cavity present होगी तो उसको कहते हैं coelomates. और pseudocoelomate false body cavity होती है जिसके अंदर. So here acoelomate means हो गया there is absent of body cavity. So here coelom is not present. Fourth one is a correct answer. Sorry, this is 96. Dash is obtained by evaporation of sea, sugar, iron, salt, steel. अच्छा, सी वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट होती है. सो व्हेन वाटर इज इवोपरेटेड फ्रॉम द सी तो सॉल्ट बनता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज 3. Biological names are generally derived from which language? French, Latin, Mexican, German. Correct answer is 2. That means biological names generally derived from Latin language. Latin is a language where the maximum of the biology जो names हैं that are derived from the Latin word. Dash is the most ecologically relevant environmental factor. Water, temperature, light, soil. So here correct answer is temperature. Temperature क्या है? It is a most relevant environmental factor. It is a abiotic factor
and from, you can see, from pole to equator it varies, and temperature is a abiotic factor and it is a very much important factor. So here correct answer is 2. Sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two dissimilar sized gametes is called 1 zoospore, 2 anisogamous, 3 isogamous, 4 oogamous. Here correct answer is 2 anisogamous. Anisogamous का मतलब होता है they are dissimilar in size. जो male gamete होता है that is a smaller one and the female gamete is a bigger one. जो big one होगा उसको दोनों का साइज होता है डिफरेंट होता है, मेल का छोटा होता है गैमेट का एंड फीमेल गैमेट इज बिगर इन साइज. सो दिस इज डिसिमिलर साइज गैमेट्स इज नोन एज एनाइसोगैमस. और आइसोगैमस में मतलब होता है दे आर इन सिमिलर शेप, उनकी साइज उनका जो होगा वो सेम होगा आइसोगैमस में. सो एनाइसोगैमस मीन्स दे आर डिफरेंट इन साइज, वन इज स्मॉलर एंड अदर वन इज बिगर वन. Friends, this is not 97, we have done till this is 98, this is 99 and this is 100. The member of Rhodophyceae are commonly called algae, green, brown, red, yellow. Here correct answer is 3, that means it is a red one. जो Rhodophyceae होती है that belongs to your red one. Red, this is a red algae. Rhodophyceae means red color algae. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures. Such organisms are called osmotic, eurythermal, stenothermal, hydrothermal. Here correct answer is eurythermal. Eurythermals जो होते हैं organism वो क्या करते हैं? They have a capacity to tolerate maximum wide range of temperature. ये बहुत ज़्यादा wide range of temperature को टॉलरेट कर सकते हैं. अगर इन अपोजिट हम बात करें स्टीनोथर्मल, दे हैव ए कैपेसिटी, दे डोंट हैव कैपेसिटी टॉलरेट टू मच ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. ये बहुत एक इसकी रेंज कम होती है स्टीनोथर्मल की. दे कैन ओनली एबल टू टॉलरेट स्मॉल वेरिएशन और स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही ये टॉलरेट कर सकते हैं. सो यूरिथर्मल इज द एनिमल दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. The members of Phaeophyceae are commonly called dash algae, green, brown, red, yellow. Here correct answer is brown. That means the member of Phaeophyceae are commonly called as brown algae. They are brown in color. The method of soil conservation in the coastal and dry region where rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover is called mulching, contour barrier, rock dam, shelter belt. Here correct answer is shelter belt. Shelter belt का मेन काम होता है they protect soil erosion. जो soil होती है उसको erosion को ये कम करते हैं. So it is made up of a row of trees that are planted on the sideways of the coastal region and dry region. So its main motto is to conserve the soil. सॉइल कंजर्वेशन के लिए शेल्टर बेल्ट लगाई जाती है. बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals are included in a which phylum? Mammalia, Chordata, Primata, Insecta. So they all are comes under the category of Chordata. Chordata means there is a presence of notochord and dorsal hollow neural system. And fishes, amphibian, reptile, birds and mammals का ये common feature है. So they are comes under the category of or phylum of Chordata. Chordata basically means होता है notochord bearing. Notochord जिसमें present होती है उसमें उसको phylum Chordata में रखा गया है. Asterisk that mean starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily are example of which phylum? Echinodermata, Annelida, Platyhelminthes, arthropods. So they all are belongs to invertebrate phylum that is known as Echinodermata. These are marine animal and they are lives in ocean. A few organisms can tolerate and thrive in a narrow range of temperature. Such organisms are called osmotic, eurythermal, stenothermal, hydrothermal. We have just discussed this question.
इन विच वी हैव हमने पढ़ा था कि उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो हमने वो वहाँ पर यूराइथर्मल के बारे में पढ़ा था. नाउ दे आर आस्किंग organism that can tolerate a narrow range of temperature. So here correct answer would be stenothermal. Stenothermals are those organisms which can tolerate and survive in a narrow range of temperature. Dash is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. Plasma formed element, blood group, coagulation of blood. So here correct answer is 1. That means 55% of the blood is plasma और बाकी 45% क्या है, it is a blood cell, blood corpuscle जो कि WBC, RBC and platelets हैं. These are the 45%. यानी कि जो blood होता है that is composed of two things, one is plasma and other one is blood corpuscles, blood cells. So here 55% क्या होता है, nearly जो 55% constituting the plasma. So here correct answer is 1. Sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two similar size gamete is called zoospore and isogamous, oogamous. Here correct answer is 3. Isogamous क्या होता है, isogamous is a gamete two similar size gamete, इनकी shape size इनका similar होता है, male and female gametes are of same size. So this is known as isogamous. Animals in which the cells are arranged in a 3 embryonic layer are called diploblastic, ectoderm, triploblastic, endoderm. Here correct answer is 3. That means triploblastic. Triploblastic क्या है, triplo means 3 layers. The embryonic germs layers arranged in a 3 layers. That means triploblastic animal have embryonic layers are present in a 3 numbers. 3 numbers of embryonic layer are present in triploblastic. उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 3. डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. जो बर्थ होती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन ए पर्टिकुलर टाइम, उसमें जो ग्रोथ वो बर्थ हुई है उसको ऐड इनिशियल डेंसिटी में ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नैटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन. So here correct answer is 1. That means natality. Natality means होता है birth rate, number of birth during a given period of time and that should be added to a initial density. So here natality का मतलब होता है birth rate, मतलब कि number of births taken place during a given period of time. कितने number of birth हुए और वो कितने समय में हुए, तो that is known as natality. Dash affect the rate of humus formation of soil, flora and fauna, time, temperature, parent rock. Here correct answer is flora and fauna. Flora and fauna affect the rate of humus formation of soil. So जब भी flora means होता है plant part and fauna means होता है animal. So जब भी ये degrade होते हैं, it is a after degradation और decay के बाद ये क्या बनते हैं, organic matter में convert हो जाते हैं. So it is a dark color organic compound which is known as humus. It is a part of the soil and it is formed by the decaying of flora, that means plant parts like leaves, stem, whatever wooden part, and fauna means whatever the kind of animal that has decayed after the dead. जब dead and decaying जो matters होते हैं वही humus form करते हैं. So it's a organic, basically it's a organic compound, it's a black color organic compound. So it is very rich in nutrients और इसमें जो nutrition की content होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें mineral compound बहुत ज़्यादा होते हैं. So flora and fauna, that means plant and animal, affect the rate of humus formation of the soil, and its main function is to improve the soil health because they are rich in nutrients. The impression of an image persists on the retina for about of a second. कितने सेकंड के लिए impression रहता है हमारी eyes के अंदर, retina के अंदर? 1/10 second, 1/8 second, 1/16 second, 1/5 second. Here correct answer is 1/16. That means image of any picture or sorry image of जो भी इमेज होती है जो कि रेटिना के अंदर परसिस्ट करती है, इट स्टे अबाउट 1/16 सेकेंड ऑफ ए सेकेंड 1/16 सेकेंड, मतलब कि 1/16 जो पार्ट है
1 सेकेंड का, उतने टाइम तक वो परसिस्ट करती है. दैट मीन इट स्टे ऑन रेटिना फॉर 1/16 टाइम ऑफ सेकेंड. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 3. एंड इसको हम परसिस्टेंस ऑफ इमेज भी बोलते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन. जो अपच की जो होती है प्रॉब्लम, उसको कौन ठीक करता है? एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक. हेयर करेक्ट आंसर इज 1. दैट मीन एंटासिड. एंटासिड क्या करता है? इट रिलीव हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये इसको रिलीव करवाता है. अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की, या फिर हार्ट बर्न होता है, या फिर और गैसेस प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर विल गिव दिस एंटासिड. इट इज़ it comes in a tablet form and it is used to treat the indigestion problem. Aurelia medusa and Adamasia polyp are example of which phylum? Ctenophora, Annelida, Coelenterata, Asca, Helminthia. Here correct answer is 3. That means Aurelia medusae and this is Adamasia polyp forms are example of phylum Coelenterata. Actually these are the animal of Coelenterata shows alternate of generation. One is medusa and another one is polyp. So they are having they are having two structures in their phylum and one belongs to medusa and another one is polyp. इसमें जो ये पॉलिप होती है दैट इज सेसाइल, यानी कि एक ही प्लेस पे रहती है, एंड मेड्यूसा इज ए फ्री स्विमिंग स्टेज. सो 2 स्टेजेस को ये एक ही एनिमल कवर करता है. ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन में ये शो करता है, जिसमें एक स्टेज में ये सेसाइल फॉर्म में होता है एंड अदर स्टेज में ये फ्री लिविंग फॉर्म में होता है. सो दिस बिलोंग्स टू दी Coelenterata फाइलम. दे शो दी ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन. इसमें अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलिप स्टेज दैट इज सेसाइल वन दैट इज अटैच टू ए पार्ट, एक पार्ट के पास ये अटैच होता है. इस फॉर्म का एग्जाम्पल है सी एनिमॉन. अगर मेड्यूसे की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं Coelenterata फाइलम के. सो इसमें एग्जाम्पल आ गया जेलीफिश. और सम ऑर्गेनिजम्स आर दोज काइंड जो दोनों ही लाइफ को परफॉर्म करते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा. एंड सम एनिमल ऐसे होते हैं जो परफॉर्म ओनली मेड्यूसे स्टेज, जो मेड्यूसे स्टेज में रहते हैं, फ्री लिविंग स्टेज में रहते हैं, एंड सम आर लिविंग इन ए पॉलिप स्टेज दैट मीन इन ए सेसाइल फॉर्म. सो हेयर Coelenterata इज ए फाइलम वेयर द example of medusa and polyps are found. So friends, this is all about 2017 CGL biology question paper. Now we will discuss more previous year questions of SSC CGL, CHSL and Delhi Police SI. Now I am stopping my video and this is all about, this is finished 2017 CGL biology section. So friends, thank you very much and please keep subscribing my channel so that you can never miss any update from my channel. Thank you very much.